वेलकम टू टेक्निकल गुरप्रीत चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि काली लिनक्स में जो यूज़र है उसको कैसे चेंज किया जाए। जैसे हमने काली लिनक्स इंस्टॉल किया है तो मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है काली लिनक्स का, ये हमारा जो यूज़र नेम है। तो अभी ये प्रॉपर नहीं है, वो एम आई, तो ये बता रहा था टेक्निकल, बट हमने जो काम करना है वो रूट यूज़र में है। तो एक्चुअली 2021 के बाद, सॉरी 2020 में जो काली लिनक्स है उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है ताकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अभी हमको एक यहाँ पर जो है जो मेन रूट यूज़र में जाना है। सो हाउ वी गो टू द रूट यूज़र, हमें जो अभी जो प्रोफाइल है वो हमने स्विच करनी है रूट यूज़र में। ये हमारा डिफॉल्ट यूज़र है लेकिन हमने काम सारा करना है रूट यूज़र में। So let's start. So now let's start with the login with that other root count. तो सबसे पहले तो we have to go to switch user and let it be open. So let's enter root, or password is root. Let's try it. Login. Yeah, your password is incorrect. Please try again later. Actually, this is not that the username of that account. So let's start here. So now my username is here technical and password is root. Enter. Yeah, ये देखिए. So my screen is open which is the user, but I'm not able to do that proper command. यहाँ पर जो command मेरी proper लग नहीं रही है because I have to type sudo and take permission from everything. After sudo t minus cat update. So if I enter it, so see it's asking for password. So that's why we have to change. We don't need password for any command, so we're gonna work out on this. Now we have to again go to the terminal, open terminal, then sudo space su. So it's asking for password because this is open, so that password was root here. Okay, so now we have to change the password of that root. So we're gonna write password and space root, new password. Okay, so it's asking for new password of the root username. तो root का username same है और password I again writing is root. Enter. Then again root. It's not gonna show here, ये screen में भी नहीं show करेगा, but enter. Password update successfully. Now we have to exit this. Again exit. Now go to here, switch user. Okay, so username is root and password was root. Enter. Okay, the screen is opening yet. Okay, it's open now. So let's go to terminal. Root is equal to Kali. Yeah, we are in the root now. Who am I? It's root. Yes. So this is that the lesson of the today, how to change your username and password and how to enter in the root username. So we have switched the profile. So I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.